month we have been meditating from book of Job 42 verse 1 and through. Okay, book of Job 42 verse 1 and 2. Then Job replied to the Lord. Everybody come on. Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be what? Come on, I know you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. अय्यूब 42 का 1 से 3 वचन। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। आपके युक्तियों से कोई रोक नहीं सकती। we stand on this confident. और हम लोग यही हिम्मत में खड़े रहते हैं। And this is what, last week, the another word we saw was verse 7 and 8. 7वां और 8वां वचन। This last two lines, we meditated on also. Come on, it says, I am angry with you and your two friends because you have not spoken the truth about me as my servant Job has. मेरे क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। Hallelujah. Again, verse 8 end it says, the Lord says, you have not spoken the truth about me as my servant Job has. क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। Hallelujah. God stands and testifies about Job's words of truth. और प्रभु वहां पर खड़े होकर अय्यूब के वचन के बारे में गवाही देते हैं। He puts his friends and Job. और प्रभु अय्यूब के मित्रों को वो अय्यूब के समान रखता है। Says, Job spoke the truth about me, but the friends who are good and well have not spoken the truth. अय्यूब ने मेरे लिए ठीक बात कही है, लेकिन अय्यूब के जो मित्र जो अच्छे थे उन लोग ने ठीक बात नहीं कही। Last Sunday we saw it from till 21st chapter. और हम लोग ने 21 अध्याय तक मनन किया। What are the truth Job spoke? अय्यूब ने कौन से सच्चाई की बात कही। It's amazing. वो एकदम अद्भुत है। In the time of pain, उसको विपत्ति के घड़ी में lost everything, जब उसने सब कुछ खो दिया, still he spoke the truth about God. और तभी भी उसने प्रभु के बारे में सत्य वचन कहा। When we take our problem, when we discuss about problem, we always try to defend. I'm telling the truth. I'm telling the truth. I'm telling the truth. जब हम लोग कभी भी कोई बात को लेकर हम उसके लिए हम पेश करते हैं, तब हम अपने आप को हम सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं सच्चाई बोलता है ना। We always wanted to show, speak, share, that we are the truth. और हम हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सच्चे हैं। Job did not do that one. और अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। Instead, he spoke the truth about God. लेकिन उसने प्रभु की सच्चाई बातों को कहा। He said about God. अय्यूब ने प्रभु के विषय कहा। What God can do in my situations. और उसके परिस्थिति में प्रभु क्या कर सकते हैं उसके विषय में कहा। Who God is to me even now in this worst situations. और मेरे खराब से खराब परिस्थिति में भी प्रभु मेरे लिए कौन है, ये बात की घोषणा की। How God can turn everything. और प्रभु सब बातों को कैसे बदल सकता है। Now few scripture today we also will see from the Job speaking the truth. Job 23 verse 4 and 5. Job 23 verse 4 and 5. अय्यूब 23 का 4 और 5। Come on, this is what it says. I would state my case. Come on, this is Job. I would state my case before him and fill my mouth with arguments. मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। It says, I will take my case before him. मैं अपना मुकदमा प्रभु के सामने पेश करता हूँ। He did not take this case to his friends. और ये उसने अपना जो मुकदमा अपने दोस्तों के सामने नहीं पेश आया। He knows they can't give a justification to him. और वो जानता था कि इसके लिए वे उसके मित्र न्याय नहीं दे सकते। Are you still holding on to your friends, your colleagues in working place, making groupism, making team, and just trying to take all the witnesses by your side? Nothing will happen, friends.
Unless and until if you don't take our case before him, nobody can help us in our case. और हमारे मुकदमा में केवल प्रभु हमें सहायता कर सकता है। He says his friends came, they came to abuse him. He says, I am not going to open my case before you guys, I will take my case before him. That's the truth. और सत्य बात यह थी कि अय्यूब ने कहा कि मैं अपना मुकदमा प्रभु के सामने पेश करता हूँ। Second, it says, and fill my mouth with arguments. I am not going to argue with you. I have all right to argue with my God. और वो अपना प्रमाण प्रभु के सामने पेश करता है। All the friends came and arguing with Job, but he says, I am not going to argue with you. I am going to tell God. और उसके सारे मित्र उसके विरोध में बात कर रहे थे, लेकिन अय्यूब ने अपना जो मुकदमा प्रभु के सामने पेश किया। See, church, our prayer has to be like this: who God is. Second step, what all happened, tell him. हमारा प्रार्थना दो भाग में होना चाहिए। सबसे पहला प्रभु कौन है, और दूसरा जो भी हुआ वो प्रभु को कहना है। You went for, your job. What happened there? You went to the school. What happened there? You had a call. What happened there? What all people spoke about you. Take it everything, send to God. God, these are my arguments. These are my cases. I give it to you. You handle it, Lord. हमारे दैनिक जीवन में जो भी होता है तो वो सब बातें प्रभु के सामने पेश करना है और प्रभु को कहना है कि आप इसको देख ले। Very often we take the case in our own hands. और कई बार हम लोग ये मुकदमा अपने हाथों में ले लेते हैं। On Friday, beautifully we saw about the Isaac's life. God blessed him. God made him powerful, but he did not take the case in his hands. और हम लोग शुक्रवार को हम लोग ने इसहाक के बारे में मनन किया कि इसहाक को प्रभु ने इतना आशीष किया, वो इतना शक्तिशाली बन गया, लेकिन अपने हाथों में उसने कोई भी मुकदमा नहीं लिया। King said, leave this place, you became very powerful to us. और राजा ने इसहाक से कहा कि तुम इस जगह को छोड़ दो क्योंकि तुम हमारे लिए अधिक शक्तिशाली बन गए He हो। opens the well, the herdsman says, not a king came to fight with him, herdsman came and they were fighting, arguing with him. What was Isaac doing? Leave, go to another one. Again the herdsman comes and troubles, he leaves, go to he had a power to harm them. The king was so fearful of Isaac, but he was not using his power to harm, he was using his power to help because he took cases before God. इसहाक के पास दूसरों को हानि पहुंचाने का ताकत था, लेकिन उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाया, बल्कि वो अपना मुकदमा प्रभु को के सामने पेश करता था। Fifth verse, come to the fifth verse. This is the truth he had. Come on, I would find out what he would. Everybody, come on. I would find out what he would. What a truth and faith he had, church. I will take my case to him. I will take my arguments to him and I would find the answer, not from my friends. It only comes from my God. मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है। Come on. Consider what he would say to me. Such a confident he goes. He had a real, truthful relationship. I speak to him, he speaks to me. That is the truth God said about Job. और प्रभु अय्यूब के विषय में ये गवाही देता है कि उसको ये विश्वास था कि वो अपना मुकदमा प्रभु के सामने रखता है और प्रभु उससे उत्तर देता है। हाथ उठाकर, come on. I take my case before God. I talk to him and he speaks to me. Come on. Hallelujah. This is the truth of the child of God. I take my case. I take my arguments. I take my problem. I take my sickness. I take all my issues before him and he answers me. Come on. And he answers me. He settles every argument. He settles every cases against you. Take it to him. Help us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus. In Jesus' name we pray. Even he calls God, so amazing. He calls God as his counsel. God calls as an advocate. He calls as God is as a friend. These are the truth. Man in the sackcloth, scratching his wounds. और अय्यूब वहाँ पर से राख के कपड़ों में वो था, और फिर भी वो प्रभु को अपना बल और उसके लिए जो सहायता करने वाला एक व्यक्ति होकर समझता है। I take my case to him. मेरा मुकदमा प्रभु के सामने रखता हूँ। Your increment has not come, your promotion has not come, your placement has not come, your appointment has not come.
go to the presence of God, take your case to Him. He will do it without anybody's recommendation. और कोई भी बोलते बिना प्रभु हमारे लिए हमारा मुकदमा लड़ेगा Hallelujah. Perfectly, He will do it. और प्रभु उसको संपूर्णता से पूरा करेगा. No blade, no blood. He will do the operation without bill. और कुछ भी बिल के बिना प्रभु कुछ भी ऐसा काटपुट करते बिना खून बहाते बिना वो उस ऑपरेशन को खूबसूरत तरीके से पूरा करता I'll है. repeat this one. Without blade, without blood, without bill, he will do the operation. You need to trust him. That's why the Lord said, my servant Job spoke truth about me. इसलिए प्रभु अयुब के विषय गवाही देता है कि मेरे दास अयुब ने मेरे विषय में ठीक कहा. Verse 11, again the truth. What is the truth he said about God? Verse 11 says, my feet have closely followed his. Come on, everybody. My feet have closely followed his steps. I have kept to his ways without turning aside. Come on, church. So much of suffering. His eyes were looking to the Lord's steps. मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा. What a distraction his friends came. उसके दोस्त आकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की. They spoke very ill about him actually. उसके विरोध में बात किया. His wife spoke so ill, curse God and die. Apre. अयुब की पत्नी ने कहा कि प्रभु को श्राप दे और मर जा. That's what somebody said. God took children and gave double. God took all the donkeys, horses. He did not take his wife. One wife is enough. Huh? Itna kafi hai. It is one person is enough to keep him on the track. The Lord, it says in all these things, it's not easy. When there is attack from inside, it's not easy. जब भीतरी से हमारे ऊपर हमला होता है वो आसान नहीं. Come on. From inside, the one who stood close, thick and thin, speaks, curse God and die. प्रभु को श्राप दे के मर जाने के लिए कहा. The woman who took a vows in thick and thin, in blessing of poverty, riches, poor, everything I'll stand. She says, curse God and die. उस स्त्री ने कहा कि प्रभु को श्राप दे के मर जा. But he says, my feet have closely followed his steps, not her words or friends' words. मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहा. Church, if you keep listen to people's voice, you will not able to take one step. अगर हम लोगों की बातें सुनते रहेंगे तब हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Hello? See, very often we are so good when people praise. At the same time, when people abuse, we become so sad. I'll tell you, even praises to you, Lord, even if everybody abuses, you listen it, Lord. I just want to keep walking. जब लोग हम लोग को तारीफ करते हैं वो भी प्रभु के लिए, अगर वो हमें निंदा भी करते हैं वो भी प्रभु के लिए. Job's eyes were fixed upon the Lord. और अयुब के जो दृष्टि प्रभु के ऊपर थी. Come on, it is in the New Testament only Hebrew. It says, fix your eyes upon the Lord. Even before says for anyone, Job already fixed his eyes upon the Lord. नए नियम में लिखा गया है कि प्रभु के ऊपर हमारी दृष्टि रखना है, लेकिन उससे पहले ही अयुब ने ये इस बात को पूरा किया. Come on, when he heard the news, all his children were dead. When he heard the news, all the herds were gone. His eyes were fixed upon the, followed Lord's footsteps. जब उसने समाचार सुना अपना, तब तक उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसका दृष्टि प्रभु की ओर थी. 23:12. What is the truth here? Said, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. The truth he lived was, I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कही, अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे. हालेलुया. हिंदी में बहुत अच्छा, अपनी इच्छा से भी ज्यादा. In English says, I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. That kept the truth in suffering. और यही सच्चाई उसको उस घड़ी में उसको सहायता किया. He did not treasure his wife's word or his friend's word. उसने अपने बीवी या अपने दोस्तों की बातों को नहीं रखा. Hello? If you give so much importance to people's word, it will hurt you, break you.
अगर हम लोगों की बातों को अधिक ध्यान देंगे तो वो हमें तोड़ देगा। Church, if the word of God is not precious, then every other garbage will hurt you. अगर प्रभु का वचन हमारे लिए अनमोल नहीं तो बाकी दूसरा सारा कूड़ा कचरा हमारे लिए वो अनमोल होगा। This should be the superior in our life. और यही हमारे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर रहना है। That's why this 50 days, go deeper in the word of God. इसलिए ये 50 दिन में हम लोग को प्रभु के वचन में अधिक बढ़ना है। Many voice will come. The voice of God has to strengthen us. और अधिक ऐसे हमें आवाजें सुनाई देगी, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का आवाज हमें बल देना है। How many of you feel it? People may speak so good, so bad, but you are satisfied only when the word speaks. कितने लोग हमारे विषय में भला बुरा कहेंगे, लेकिन हम लोग को संतुष्टि प्रभु के वचन पढ़ने से होती है। Somebody say, come on. That should be our life, church. और वही हमारा जीवन होना है। बेटा बेटी लव यू बोलता है, ये वो बोलता है, वो सब ठीक है। एक दिन लव यू बोलेगा, एक दिन हेट यू बोलेगा। हाँ, जैसे हम उम्र बढ़ते जाएगा, प्रॉपर्टी है वो आने के बाद असली प्यार पता चलेगा। बट यू नीड टू डू, यू हैव एनीथिंग और नथिंग, दिस वर्ड ऑलवेज सेज ही लव्स अस एनीहाउ, हाउएवर ही स्टिल लव्स अस। हम जैसे भी हो, कैसे भी हो, प्रभु का वचन हमसे प्रेम करता है। Verse 13, what was the truth about him was so beautiful. Verse 13 में आएंगे, come on. But he stands alone, and who can oppose him? He does whatever he pleases. Come on, everybody. He does whatever he. See, he was going through pain. If I go through pain is pleasing to you, I am ready, Lord. That's the truth of Job. और अय्यूब कहता है, परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। Hallelujah. You said, okay, Lord, if going through is, if the today what I am is pleasing to you, I am happy, Lord. अगर आज मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, अगर वो आपको प्रसन्न करता है तो मैं भी खुश हूँ। Come on, church. When Jesus was in Jerusalem, when he was going through all the pain, so Roman soldiers, 600 Roman soldiers spitting on his face, and he took thrice or 4 times bath with the saliva. The saliva they are spitting after Jesus was, slashed, body was bruised, blown. When you spit, it burns a lot. He still goes through. Reason, heaven is pleased for this sacrifice. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले जब उनको अधिक मारा गया, उसके बाद जो रोमी सैनिक लोग थे यीशु के ऊपर उनको थूका, वो थूक के कारण अधिक यीशु को वेदना हुई, लेकिन यीशु जानता था कि यीशु के बलिदान से स्वर्ग प्रसन्न होता है। He does whatever he pleases. और जो वो चाहता है वही वह करता है। He was sitting on the ash heap, putting all ash and sackcloth, scratching, and says, if this position is pleasing you, I am ready to be in this position, Lord. और अय्यूब वो अपने ऊपर राख डालता है और टाट के कपड़े ओढ़ता है, और वो कहता है कि अगर ये आपको प्रसन्न करता है तो मैं इसमें खुश हूँ। He did not say to God, why I am in this situation. He says, if you are pleased, that's okay. अय्यूब ने प्रभु से ऐसा नहीं पूछा कि मैं इस परिस्थिति में क्यों हूँ, लेकिन अगर वो प्रभु को प्रसन्न करता है तो वो उसने अपने आप को अर्पण किया। We need to ask ourselves also, church, I am here, O Lord. I am in like this. I am at my home like this. I am at my office like this. If it pleases to you, I am pleased, O Lord. और हमें भी प्रभु से कहना है कि मैं अपने घर में, मैं अपने काम के जगह में मैं ऐसा हूँ, अगर ये प्रभु को प्रसन्न योग्य है तो मैं भी प्रसन्न हूँ। As we were in the pastor's fellowship, when we were praying, there was one question that came to me. Jesus enters inside the temple. Okay, we read in the Luke and Matthew. Jesus enters inside the temple. He took the whip. He was hitting, toppled the table. Jesus enters here. Will you do like that? Or he will say, I am pleased with you.
और यीशु जब यरूशलेम में जब जाते हैं तब उस मंदिर में जब वो घुसते हैं तभी उधर पूरा जो टेबल को उलट पुलट कर दिया और वो लोगों को वहाँ से हटाया। तो मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया कि जब यीशु हमारे बीच अंदर जब वो आएंगे तो क्या वो ऐसा करेंगे या अपने से प्रसन्न होंगे? Come on, church. Literally, ये offering bottle तू फेंक के, कुर्सी फेंक के, or else he will say to us, I am pleased with you. यीशु क्या इधर सारे चीजें फेंकेंगे या हमसे कहेंगे कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ? Literally, physically, कैमरा को उठा, क्या करते तुम लोग? क्या करते? करेगा बोलेगा, Are what you're doing? I am pleased. What will be his attest over us? और यीशु हमारे लिए क्या कहेंगे? He comes to our house physically, he is there. He will throw things out. He will be plugging the TV and throwing it out from the first floor. Or he will say, I am pleased how you are using the TV. यीशु हमारे घरों में जब आएगा तो क्या वो टीवी को उठा के फेंकेंगे या कहेंगे कि आप जो टीवी में देखते हो उससे मैं प्रसन्न हूँ? Come on, you one-on-one with standing with Jesus. He will be pleased the way you use the phone. I will take it and throw it out. I will say, I am well pleased the way you are using it. और यीशु जब हमारे फोन को लेंगे तो क्या वो फोन को फेंकेंगे या वो कहेंगे कि मैं प्रसन्न हूँ? Jesus in our vehicle. यीशु जब हमारे गाड़ी में आते Jesus हैं, in our office. यीशु हमारे ऑफिस में, Jesus in our conversation. और यीशु हमारे बातचीतों में। This is the words. Even Jesus comes with us to the bank, the way we use the money, the way we withdraw it, the way we spend it, the way we do it, in everything, Jesus will be pleased or he will be toppling the things. यीशु अगर हमारे साथ बैंक में आए या हम जो भी करें, क्या यीशु वो सारे बातों को फेंकेंगे या हमसे प्रसन्न होंगे? He stands and says, just so beautiful. Come on, Jesus entered the temple court and drew out all who are buying and selling there. He overturned the table, the money changers and benches of those selling doves. यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले को की चौकियां उलट दी। I want to share a testimony. Last October I was in Kenya. Okay, I was so much blessed. Whenever I preach, there was a girl used to sit and operate. Okay, certain scripture I don't say. This word, it is written in the Bible, but that girl will be putting it. I was praying, now God has blessed us with that gift to Joshua. Shall I give a big hand? It's not easy, church. He has to connect with me and hand has to be connect there. I'm sorry to say, all those who are sitting there, he's one of the best now. Fellow, he doesn't speak. Yeah, we never appreciated him, Nice fellow, Joshua. God bless. Exam hai, yaar. कल सुबह साइंस होता है, बच्चा फ्राइडे शाम को इधर रहता है. हाँ, God bless those guys. कहाँ था? Okay. Whatever he pleases. So सच में, when Jesus comes, he will say, Joshua, you are doing a good job, man. And वहाँ भी तुम लोगों को भी बात दे के बोलना चाहिए. हाँ? Look, you are doing it. I am well pleased how you are doing it. आप लोग जो करते हो उससे मैं प्रसन्न हूँ। Other one, 17th verse, 23 verse 17. I'll just finish in 10 minutes. 23 verse 17. Come on. Yet I am not silenced by the... Come on, church. Look at the truth he speaks. Yet I am not silenced by the... Full of darkness, actually. Full of darkness. By the thick darkness that covers my face. Look at reports, things, everything he listens. He says, I will not let the darkness silence me. क्योंकि मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ और घोर अंधकार ने मेरे मुंह को ढांप लिया है। Hallelujah. Yet I will not be silenced by the darkness. इसलिए मैं अंधकार से मैं ऐसे चुप नहीं किया जाऊंगा। Stands and speaks the truth, church. और वो वहां पर खड़े होकर ये सत्य के वचन को कहता है। हम तो रात को कुछ हिलाएगा तो उधर का पूरा बंद करके अंदर, हालेलुया जीसस। हाँ, किसी थोड़ा शैडो किसी का मिल गया, नीचे सिक्योरिटी वाला का शैडो ऊपर आ गया है। हाँ, थोड़ा पत्ता हिल गया है, नहीं तो रात को बिल्ली चिल्लाएगा तो ओ गॉड, काला बिल्ली, ये बिल्ली, वो बिल्ली, सारे बिल्ली का डर रहा है। He stands and says, I will not be silenced by the darkness. मैं अंधकार मुझे चुप नहीं कर सकता।
I'll stand because he knows I am sick, weak, but I have an eternal light. वो कहता है कि चाहे मैं निर्बल भी हूँ लेकिन मेरे अंदर एक नित्य ज्योति है। I sometimes don't like, some of them said, Pastor, if you walk in the light side, you will feel so heavy. I said, the presence of God is much heavier than the whole world. That's much blessing, much peace. You don't need to worry. ना आपको भी बोलेगा वो स्कूल एरिया का पीछे, वो कब्रिस्तान का इस तरफ है. Don't need to give all the years to that one. Stand even in the Kabristan, even in the graveyard, you will walk with light without darkness. और हम लोग कब्रिस्तान में भी खड़े हो, वहां पर भी हम ज्योति के साथ हम चलेंगे। Come on, I will not be, yet I am not silenced by the darkness. और घोर अंधकार ने मुझे शांत नहीं किया। Turn to your neighbor and say, nothing can silence you. Come on. Speak prophetically. Whatever people are speaking, whatever people are plotting, nothing will be silencing you. You will keep singing. Your singing will not be silenced. Your prayer will not be silenced. Your prayer work will not be silenced. Your giving will not be silenced. Nothing can be silencing us. और कोई भी बात हमारे अंदर वो शांत नहीं कर सकता। If Job can, how much we can? अगर ये अय्यूब कर सकता है तो हमें कितना अधिक करना है। No, one more scripture in the same chapter, says verse 27 verse 4. Verse 27 verse 4. 27:4। 27 verse 4. Come on. My lips will not say anything wicked and my tongue will not utter lies in the deep suffering. मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। We are just before us a 50 days fasting church. Get ready to walk in the truth. और हमारे सामने 50 दिन का उपवास प्रार्थना है और हम लोग को सत्य में चलने की आरंभ करना है। Parents, we have to speak. My children will never be in the darkness. They will walk in the light. They will be blessing. They will be keeping the word of God as their treasure. और हमें माँ बाप होने के नाते हम लोग को ये बात कहना है कि मेरे जो बच्चे हैं वो ज्योति में चलेंगे, वे लोग वचन में चलेंगे। Say, our case always before God. I will always talk to God and argue with God and I will have answer from God. हमारा मुकदमा हमेशा परमेश्वर के सामने पेश किया जाएगा और उस बात के लिए मुझे उत्तर मिलेगा। We need to always trust God in all situations. और हम लोग को हर बात में प्रभु के सामने जाना है। That's why God says, my servant Job spoke truth about me. इसलिए प्रभु कहता है कि मेरा दास अय्यूब ने मेरे विषय ठीक कहा। What will be our testimony? हमारे लिए प्रभु का क्या गवाही होगा? Hallelujah. He spoke truth about me. और अय्यूब ने मेरे लिए ठीक बात कही। Are we ready to speak the truth in the vulnerable situation, church? हमारे खराब से खराब परिस्थिति में क्या हम सत्य के वचन बोलने के लिए तैयार हैं? No, there are so many things, we'll see it on Friday, Wednesday and Friday. बाकी बातें हम बुधवार और शुक्रवार की प्रार्थना में देखेंगे। Stand in the presence of God. Thank you, Jesus. यीशु तेरे गरीबाने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से
धन्यवाद धन्यवाद अय्यूब का समान हाथ उठाकर, I will take my case before my God and He answers me. I will be silent before God. I will treasure His word. I will watch His steps, footsteps. I'm going to silence every darkness. I'm not going to respond. I'm going to silence every darkness. Come on, church. Hallelujah. In all situations, I'm going to be silently look to Him. I'm going to watch. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Lord will help you, church. I do not know who you are standing. There are people cursed you. People ने बहुत बुरा बुरा बोला है. I want to tell you, you stand in the truth of God's word. God's word says He blesses, and whom He blesses, nobody can curse. Come on, you need to stand in the truth. मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करता है. मुझे मेरे परमेश्वर आशीष किया है. कोई शराब नहीं कर सकता है. कोई खराब नहीं कर सकता है. Come on, people would have spoken very ill about you, your past. They would have spoken very ill about your children. They would have spoken ill about your parents, ill about yourself. Just forgive them. It doesn't matter. But Job goes to God. You speak, Lord. You speak over my life, Lord. Come on, ask God, you speak over my life. Hallelujah. When He speaks, there is life, there is strength, there is joy, there is peace, there is blessing. Thank you. We love you, Jesus. We thank you for leading and guiding and helping us this far, oh Father God. Thank you for the great good news you have given us, oh God. Thank you for the miracle you have done. Thank you for, Lord, hallelujah. Come on, church. You topple the table set against Naman brother and family, oh Father God. You topple the table, oh Father God. You topple the table. You enter inside the hospital. You enter inside and you topple that report, oh Lord. I want to thank you, Father God. Bless, oh Lord. And from Psalm 81, you gave us the word. You have taken away the burden, oh Father God. And you have filled our mouth, oh Father God. And we are going to see great mighty things, oh Father God. You have satisfied us, oh God, with the best, oh Father God. Thank you. Be with your children. Bless them, oh Lord. This is more than enough for us. You are hearing our case, oh God. You are speaking over our life. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shall we give a big hand to the Lord? ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें. Amen. Amen. Lift a hand for the blessing. Now may the Lord bless you. May the Lord keep you. May His light shine upon you. Be gracious to you. As the Lord spoke His word, He will speak just like He spoke over Job. You spoke truth. And the truth is, He has taken away all our burden. He has filled us with His goodness. And He has blessed us with the best and satisfied us. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, love of our Heavenly Father, the sweet coming of the Holy Spirit of God be with us. Very specially, with excited, we are waiting for the 50 days of fasting to rebuilding our relationship with God by reading the Word of God and going for prayer walk and praying for the families till Jesus return or we return. And all God's children say, Amen. Hallelujah. बोलो मगराज यीशु मसीह के राजा यीशु मसीह के. God bless you all. Thank you for joining. We'll continue this one on Wednesday and Friday.